गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लीगल लिटरेचर के अलावा एक ऐसे इम्पोर्टेंट इशू पर चर्चा करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है और डेफिनेटली ये रिलीजियस सेरेमनी से रिलेट है और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग होने के नाते हमारी कंसर्न भी है। तो आइए हम लोग आज की चर्चा शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे आया है। उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया है। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हाल फिलहाल में जो सोशल मीडिया हाउस वेरियस मीडिया हाउस से यह न्यूज इमर्ज हो रहा है, जिसे ये पता चल रहा है कि आने वाले ईद जो है, जो हमारे कलकत्ता में रेड फोर्ट में सदियों से पढ़ा जा रहा था या पढ़ा जा रहा है, उसको आगे जो है बंद किया जाएगा। नॉट ओनली दैट, वेस्ट बंगाल के वेरियस पार्ट में भी हो सकता है कि ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए बंदिश लगाए जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को लिखा, कॉपी टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट को किया। यदि आप अपने स्तर पर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को सम्मान देते हुए आप कर सकते हैं। तो आइए, मेरा उद्देश्य आपको शब्दशः जो है मेरे रिप्रेजेंटेशन को से अवगत कराना है। मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन का विषय रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशंस, restrictions on Eid Namaz and request for equal treatment of all religious ceremonies. Respected sir, the humble representations is being submitted in the interest of constitutional value, secularism, communal harmony and protections of fundamental rights granted under the Constitution of India. It is respectfully submitted that reports have emerged in various media platforms regarding possible restrictions, non-permissions of offering Eid Namaz at public place, including Red Fort Maydan and certain areas in West Bengal. The said reports have created serious concerns amongst members of the Muslim community, particularly when Eid prayer is peaceful religious observance conducted only once or twice annually and generally lasts only for the short durations. It is further respectfully submitted that the undersigned is presently not aware whether any formal circular notifications or official order has actually been issued by the competent authority in this regard. However, widespread circulations of such news has created apprehensions and confusions among the public. It is respectfully submitted that in many parts of the country, public roads and open space are routinely permitted to be utilized for various religious festivals, pandals, and processions and ceremonies which continue for several days. In particular, Durga Puja pandals often remains entered for 10 to 15 days with temporary occasions of road and public place, and such arrangements are accommodated in the
larger spirit of religious harmony and coexistence. In such circumstances, denial or restrictions of Eid namaz for a single day may create an impression of unequal and discriminatory treatment contrary to the constitutional ethos of secularism and equality before law granted under Article 14 of the Constitution of India. It is further respectfully submitted that every constitutional authority, including a chief minister, takes oath under the constitutions of India to uphold the constitutions and act without discrimination towards any religions or community. Therefore, any administrative actions which appears to selectively restrict a peaceful religious practice of one community raise serious constitutional concerns if the issue genuinely relates to a public inconvenience, traffic management, or public order, then a uniform policy should be implemented equally for all religious ceremonies and public events, irrespective of religion. Selective restrictions upon only one community would be contrary to the constitutional principles of equality, secularism, and fair governance. The constitutions of India guarantees equal protections of law and freedom of religion under Article 14 and 25. Any selective applications of administrative standards may adversely affect public confidence in constitutional governance and communal harmony. Therefore, it is most humbly prayed that no discrimination restrictions may be imposed upon peaceful Eid namaz gathering solely on the basis of religions. Any policy regarding use of the public space for religious ceremony may be applied uniformly and equally to all communities. Necessary clarifications may kindly be issued regarding the actual positions of the government in relation to media reports concerning restrictions on namaz prayers. Constitutional value of secularism, equality, and religious freedoms may kindly be protected and preserved. This representation is being made purely in the interest of the constitutional morality, equal treatment, and maintenance of communal harmony. Yours faithfully, एडवोकेट नसीम अख्तर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल। अगर आप अपनी तरफ से कोई पहल कर सकते हैं जरूर कीजिए, और बाकी रहा गवर्नमेंट का जो डिसीजन लेना है वो अपने लेंगे। उनके अभी एब्सोल्यूट पावर है, मेजोरिटी में है। वो अगर क्या कहते हैं असेंबली में कोई लॉ पास करे कि नहीं ये पब्लिक स्पेस में नमाज पढ़ना इलीगल है, तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज सेपरेट इशू। तो आप सब जानते हैं कि हम सब जो है शहरी जो है, हम सब सिटीजन जो है लॉ के पाबंद होते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे ऊपरी है। तो होपफुली आपको आपका ये मैटर, आपका ये कंसर्न्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये मैटर जो है अच्छा लगा हो, या फिर आपको ये कंसर्न है, आप इससे मोटिवेटेड हैं, तो आप अपनी तरफ से अपने ढंग से कुछ पहल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। वंस अगेन गुड इवनिंग, जय हिंद।